we completed our worksheet work, that is scene passage 1 and 2. Today we are going to do our unseen passage work 1. Unseen passage work, unseen passages are those which we never read before this. हमने अभी पहले से इससे पहले हम कभी पढ़े नहीं हैं. एक इस चैप्टर के अनसीन पैसेजेस है. चैप्टर नंबर 11 द वॉरियर किंग हमने जो रीड किए थे और जो क्वेश्चन आंसर्स राइट किए थे उसके अनसीन पैसेज है पेज नंबर 11 में हमारे वर्कशीट में. ओके, हमारे वर्कशीट में पेज नंबर 11 टुडे वी आर गोइंग टू डू. Before going to that one, we will revise our story of the warrior king, chapter number 11. Chapter number 11 is the warrior king. It's a story about Maharana Pratap Singh. Before knowing about Maharana Pratap Singh, we read a warm-up activity as the Robert the Bruce, the king of Scotland. Scotland king who tried but he never completed his success, so he tired and get into the rest. That time he saw her in one cave, the spider, that small spider is trying, he never let it go for rest. That time he knew that I have to try but never cry. So he inspired by that spider and he started his work as a fighting in front of that England king against that England armies. 7th time he get success fighting with that army. It's our warm-up story, and our story is about the warrior king Maharana Pratap Singh. Maharana Pratap Singh was the Maharana Uday Singh's elder son. Maharana Uday Singh was ruler of Mewar. Mewar is an important kingdom of Rajasthan. It's situated in Rajasthan and its capital was Chittor. And when Maharana Pratap was a little prince, Rajkumar jab the, that time he was prince. That prince was brave and a kind boy. And he always interested in weapons and sports. He never interested in doing sums and learning languages. That time everyone loved that, admired that child. He will become a great king in future. Everyone knew that he will become a great king in future. After some time, Chittor was captured by a Mughals. That time, his father, means Maharana Pratap Singh father, Uday Singh, was changed his capital Chittor to Udaipur. That time the king, means the prince Maharana Pratap, was 28 years old. That time he had owed, means he promised that he will get Chittor one day back. Okay, what was his promise? He promised Chittor he will get one day from the Mughals. So what he did a promise, एक दिन में चित्तौर मुगलों ने हमारे पापा से जो छीना है वो मैं वापस ले लूँगा. So after this his father died and Maharana Pratap became a Maharana, means king, Maharana of Mewar. मेवार के वो राजा बने. That time he began to gather a large army in front against Mughals. मुगल्स के सामने वो बहुत सारे आर्मी को इकट्ठा किया और उनको इंस्पायर किया. फॉर व्हाट? दे हैव टू कंटिन्यूसली फाइट विथ द मुगल्स टिल दे विल गेट बैक चित्तौर. सो जब तक हमारा चित्तौर वापस नहीं आए हम फाइटिंग करते रहेंगे. ऐसे उन्होंने अपने आर्मी को ट्रेन अप करते रहे दिन एंड रात. अगेन ही टेक अ वोट. अगेन उन्होंने एक प्रॉमिस बनाया उनके आर्मी के सामने. कौन सा प्रॉमिस था? आई विल
हैव माई फूड एट अ लीफी फ्लैटर्स एंड आई विल स्लीप ऑन अ फ्लोर। मैं जब तक चित्तौड़ वापस नहीं लूँगा तब तक मैं फ्लोर पे सोऊंगा और लीफी मीन्स पत्ते के इसमें मैं खाना खाऊंगा। ऐसे उन्होंने अपने सैन्य के सामने प्रॉमिस किया। देन ही वॉन्ट अ सपोर्ट फ्रॉम हिज आर्मी। दैट टाइम he requested his army to support him every time. That time his men also promised Maharana of Mewar they will fight until their last breath. उनका लास्ट ब्रीथ तक वो फाइट करते रहेंगे। Then one day after some time two armies met at a Haldi Ghati. Where who met at Haldi Ghati? Mughal army and Maharana Pratap's army met at Haldi Ghati. That time Maharana was leading his army and Mughal's army was led by Raja Man Singh. Raja Man Singh was on elephant and Maharana Pratap was on his brave horse Chetak. Then the Mughal's army was very large and in front of Maharana's army. That time Raja Man Singh's elephant injured the Chetak and Maharana Pratap Singh too. That time his horse Chetak knew that my master will now not serve, वो अभी बचेंगे नहीं बोल के what he did, that Chetak knew he had saved his master. उसको लगा मेरे मास्टर अभी बचेंगे नहीं। हु इज़ हिज मास्टर? महाराणा प्रताप वॉज हिज मास्टर। वो बचेंगे नहीं करके उन्होंने क्या किया, चेतक ने ही कैरीड द महाराणा एंड स्विफ्ट अवे फ्रॉम द फाइटिंग एरिया। चेतक अपने महाराजा को लेके फाइटिंग एरिया से भाग गया। ओके, देन ही लीप्ड अक्रॉस अ पास, महाराणा को सेफ प्लेस तक लेके गया। देन चेतक फेल डाउन एंड डाइड, चेतक नीचे गिर के मर गया और अपने राजा को सेफर प्लेस में रखा था। सो महाराणा बिल्ट ब्यूटीफुल गार्डन in the memory of a brave horse Chetak. Then after this also Mughals army continues chasing the Maharana Pratap Singh. So that time Maharana Pratap was living in Aravali mountains. During this time Maharana lived at a mud hut and with his family. That time जब ये सारा होने के बाद भी मुग़ल आर्मी जो है वो उनको पीछा करते ही रहा। पीछा करने के टाइम ये कहाँ छुपे थे? अरावली हिल्स में ही अरावली हिल्स कॉन्स्टेंटली फैमिली लिव्ड इन अरावली हिल्स विथ अ हार्डशिप। बहुत ही कठिनाइयों के सामने करते हुए उन लोग वहाँ पे अपना जीवन बिता रहे थे जंगलों में। वन डे व्हाट हैपेंड, महाराणा's daughter was having her food. That time one wild animal attacked Maharana's daughter and snatched her dinner from her hand. उसके हाथ में से, बच्ची के हाथ में से, जंगल में तो ऐसे एनिमल्स रहेंगे ही, सो उसका हाथ में का खाना छीन लिया। तो महाराणा को बहुत ही बुरा लगा। That time he thinked for some time, I have to give up now. मुझे अभी ये सब छोड़ देना चाहिए, मुझे मुगलों को शरण होना चाहिए। But in a next moment he remembered his promise and he not give up his strength. He continually started fighting with the Mughal army. Then one day what happened, Maharana was very interested in hunting also. When Maharana Pratap was 57 years old, that time he badly injured when he went to the hunting के टाइम वो बहुत ही पूरी तरह से इंजर हुए। उस टाइम उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को बुलाए और अमर सिंह को बुला के उन्होंने उनसे पूछा,
आप मुगलों से he had a promise from his son he will continue fighting with the Mughals and he will get back Chittor one day. So that time Maharana Pratap take a promise from his son Amar Singh and he get a last breath. Maharana was Mewar, the great hero of Mewar died. It's our story and we are going to do everyone whenever we are doing next part we have to revise our first part. हमने पहले जो जो किया था वो सभी हमें रीड करके हमें रिवाइज करके ही नेक्स्ट टर्म में हमें जाना चाहिए. So I continued this all this story I revised you all. Okay, now come to the our unseen passage. So unseen passage is ours at page number 11. Page number 11, unseen passage 1. This is Daco, native of South America. He is member of tribe of Indians who live in the middle of rainforest. Their settlement is on the banks of river Singo. Daco's tribe is one of 16 tribes who share the Congo Park region in Amazon jungle. The river gives them the regular supply of fish and fresh water. They are also hunt wild animals that come to drink near the water edge. Daco's home was built by his father and members of a tribe. First, they clear away a large patch of forest land with the axes. Then they cut down the tall trees. Friends creeps leaving a single palm tree standing in center after clearing, around which they built a large bamboo frame. Okay, this is a unseen passage about Daco. Daco, his native is South America. एक यहाँ पे पर्सन का नेम है डाकू है, वो साउथ अमेरिका का होता है. वो ट्राइब मीन्स वो जंगल में रहने वाले जो ट्राइब होते हैं उनके एरिया में है. वो कहाँ पे रहते थे? वो ट्राइब मेंबर ऑफ ट्राइब ऑफ इंडिया का उनका मेंबर ऑफ इंडिया में भी उनका ट्राइब है. वो ट्राइब कहाँ का है? मेन इंडिया का है. वो साउथ अमेरिका में जाके रह रहे हैं. उनका एरिया है अमेजॉन जंगल. अमेजॉन जंगल में जो सिंगो रिवर है उसके बाजू में वो रहते हैं. और ये जो रिवर है उनको फ्रेश वाटर और फिश देता है. सो दे आर लिविंग देयर. फर्स्ट उनको रहने से पहले वहाँ पे रहने के लिए हट बनाना पड़ता है. तो उन्होंने बहुत बड़ा एरिया देख के उनके फादर और उनके डाकोज होम वॉज बिल्ड बाय, उनका होम जो था वो उनके फादर ने बनाया था. उनके मेंबर्स और फादर मिलके ये होम बनाए थे. कैसे बनाए थे? बहुत बड़ा एरिया को, प्लेन एरिया को कट करके वहाँ से उन लोग बम्बू से और पाम लीव से अपना घर बनाते थे विथ अ लार्ज बम्बू फ्रेम. इट्स अबाउट डाकू. वेयर डज डाकू लिव? डाकू lives in South America. What is the name of his tribe? The name of his tribe is Indians, tribe of Indians. Okay. Daco's tribe is one of 16 tribes who share the Congo Park region, Amazon jungle. Okay. Now, why does the tribe live near a river? Because the river gives them the regular supply of fish and fresh water. They are also hunt wild animals. Okay. Now turn the page. How was the hut built? Hut was built. First they clear away a large patch of forest land with the axes. Then they cut down the
tall trees, ferns and creepers leaves, single palm trees standing in center after clearing around which they built a large bamboo frame.